हम बिपाशा जी यहाँ आपके राइट में। अरे बिपाशा जी यहाँ पे। किस मार लेना। निकाल लेते। तो बापू बिपाशा मैडम आपके लेफ्ट में देखिए मैडम। सर जी आपके लेफ्ट में राइट में। सॉरी सोलो पिक्चर क्या दो एक सोलो पिक्चर उधर पीछे बूम निकाल। यहाँ पे मैम। Yes, look, sir, look. Ma'am, center. Ma'am, center, ma'am. Mother look up. Who's taking? Take a picture now. I think I got married only because of my media interest, I guess. Thank you. मैम खाली गए ना मत दो मैम यार ऑफ है सीट वालों की यहाँ पे लुक है मैम यस यार दिस कैमरा ऑल ऑफ यू सेंटर सीट वालों की यहाँ पे ये वाला मुझे नहीं मिला। मैम यहाँ पे सेंटर। मैम यहाँ पे सेंटर मैम सेंटर देखिए मैम इधर जी बिपाशा जी थैंक यू। मैं आ रही हूँ कैमरा में। चलो बस। थैंक यू। काम पे जाना है फिर। चलो चलो चलो। रेडी? रेडी यार रेडी। मैं सवाल का सेंटर जी। रेडी? अच्छा क्या ऐसा क्या चक्कर है आत्मा का जो आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ी और अर्जुन के पास जाना पड़ा? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल छोटा पर्दा जो है इतनी रीच उसकी इतनी सॉलिड होती है तो आज मज़ा आया एक्चुअली इस एपिसोड में काम करके because I realized the functioning it's quite fast and it's very modern and everything is just the way that we shoot films. So अर्जुन के पास आज आई थी क्योंकि ये लोग बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं। Today's episode is about basically जो घरेलू हिंसा होती है against women, we are talking about that। और मेरा जो कैरेक्टर है माया का फिल्म आत्मा में, it also goes through a little bit of marital problems with her husband Abhay, and keeping in mind the story of the film, we have kind of adapted a story for this particular episode of Arjun, and I'm pretty happy being here. Where did you go? Oh, you're here. अच्छा अर्जुन ये बताइए कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इनके केस में? टेररिस्ट तो आप काफी सुलझा ये पहला ऐसा केस है जिसमें हम काफी दिलो जान से काम कर रहे हैं और बहुत मजा भी आ रहा है केस सॉल्व करते हैं। सो देयर आर नॉट मेनी केसेस जब हमें सॉल्व करते हैं ज्यादा मजा आता है। दिस इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द वेरी फ्यू, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी डिफरेंट केस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द कंट्री एज वेल बिकॉज द टॉपिक दैट वीव taken up for this particular episode is something that is very shocking, striking and very depressing, but I just hope कि इस episode के through हम कुछ सुधार ला सके समाज में। And not only that, I think
even if you contribute 2% for her movie, which is going to be like the best thank you from our side to her. How sweet. Thank you. Thank you. फिल्मों में तो बड़े आराम से होता है काम, आप देखेंगे शॉर्ट बड़े आराम से होता है, ये काफी क्विकली काम कर होता है जी, टीवी वाले, जी, तो इसको बहुत। कितना एंजॉय करती है जो एक हेक्टिक शेड्यूल होता है? थोड़ा सा इन लोगों के सामने इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इनकी एक ट्यूनिंग है और यू नो दे आर यूज्ड टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट्स स्पोकन इन दिस पर्टिकुलर you know the way it's written and stuff, so it's a little like sometimes a little unnerving, but honestly we get a little more time to relax and shoot. तो इन लोगों पे ज़्यादा pressure रहता है, and then in that little time they deliver so much and it's really credible. Yeah. विपक्ष, आपकी फिल्म के बारे में अगर हम बात करें आत्मा के बारे में, तो आप जैसे हमने पढ़ा है कितना कुछ बता रहे कि एक सीन देने के बाद आप काफी रोई थी और आपको तब पता चला कि जो एक इंडियन लेडी है उसे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी कि बाकी देखिए डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें अगेंस्ट विमेन, ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं, इट कैन हैपन एट एनी, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, ये कहीं भी हो सकता है, पर when I was filming it, to go through the motions of the scene, when you were a part of it, and Nawaz and me got into it very really, so when the scene got over, I just could think that you know अगर मैं ऐसे रिश्ते में फंसी होती, you know, in a marriage like this, where you know my partner, my spouse, in the name of love, in the name of emotional attachments, in the name of anything, you know, uses violence over me and just treats me like a commodity, it's very humiliating for a woman, you know. It's you know also फिल्म में दिखाया गया है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी अचीवर्स बन जाती हैं, they get a lot of social standing, they are intelligent, they are smart, they are well to do, सिर्फ छोटे you know we are not talking about only rural women, we are talking about urban women of today, and these are women also who are going through these kind of abusive relationships, you know, and it's quite sad. I think every woman, anyone who you know in the name of love is stuck in relationships like this needs to stand up for herself, and especially Women's Day is around the corner. I think one thing that every woman should start doing is treat herself as a priority, and basically start loving yourself, start respecting yourself, and everything else will be fine. क्योंकि विपक्ष आपने फिल्म की तो आपको एक रियल फेस भी पता चला शादी के बाद का कि ऐसा भी होता है, तो लेकिन जब शादी के बाद की जरूरत नहीं है, इट हैपेंस इन रिलेशनशिप ऑल्सो, तो जब आपने शादी का जो प्लान किया है कि वाकई अगर आप ऐसे रिलेशन में फंस गए तो आप क्या? मैं तो उसको मार के उसका भुर्ता बना दूंगी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मुझे मारे कोई आके तो मतलब दम उसका मैं मार के उसका बैंगन भरता बना दूंगी। तो ये मौका हमें कब मिलेगा, लाइक और कितना वेट करना पड़ेगा? किस चीज का कि मैं मारूं अपने हस्बैंड को? पहले मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए। शादी इतनी यू नो हलवा नहीं होता है। You have to spend the rest of your life with this one person who you know, so you have to find your soulmate. Hopefully I find him soon. I'm not looking though. Let him find me. Yeah. लेकिन विपक्ष क्या कारण है कि इन दिनों आप जो राज के बाद में जो एक हॉरर जॉनर में ही चली गई है, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? देखिए चली नहीं गई हूँ, बैक टू बैक विदाउट प्लान आई हैव दीज टू फिल्म्स, Raz 3 and Atma, but there was no plan to it. It's just that these two are fabulous, entertaining stories with a lot of performance scope for me. So whether it's Shania or Maya, I think there was a lot to do in the film. You know, I'm a little tired of being an accessory in a film all the time and looking pretty, singing songs. I've done that. You know, I've been in the business 12 years. So I'm a little exhausted. So I'm looking for meat. And if it comes in the form of entertaining films with a great role, why not a supernatural genre? Because it's a very new genre which is not tapped much in the Hindi film industry. And it's still dream role which you waiting for? Oh no, I've done lots of roles. I'm going to be doing lot many. So there's no particular plan in place. Yeah. Thank you. Thank you everyone. Thank you guys. Thank you. Thank you all the best. Thank you. Thank you. I thought you'll shoot me. You're taking out your gun. He was asking you to take it out. Thank you. Thank you. Take care. Thank you guys. Thank you everyone. All the best. Thank you. Would you mind? I have a mic.